हेलो 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 हेलो। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आ रहा हूँ, मतलब आज मैं अपने माइक्रोफोन से तो नहीं आ रहा। आई एम एक्चुअली ट्राइंग समथिंग डिफरेंट नाउ टुडे। लेट मी जस्ट चेक कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे तो एक्चुअली मैं शो कर रहा है मुझे कि आवाज़ आ रहा है प्रॉपर्ली, बट स्टिल हैव टू चेक इट वंस। वन सेकेंड। एक सेकेंड यार, अभी थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है ना आवाज़ अभी। तो एक बार आवाज़ क्लियर आ जाए तो इसमें जो है। वन सेकेंड, लेट मी चेक। फिर भी यार, मतलब अगर मेरे को आवाज़ क्लियर आने के लिए, मतलब इधर मेरे को शो कर रहा है, बट फिर भी मेरे हिसाब से जितना मैं सुन पा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा वैसा आ रहा है, मतलब इन अ वे, मतलब वो फटती है ना आवाज़, वैसी टाइप आ रही है। तो एक बार लेट मी जस्ट चेक इट वंस। भी आ रही है, अगर मेरे को आवाज़ क्लियर आने के लिए, मतलब इधर मेरे को शो कर रहा है, बट फिर भी मेरे हिसाब से तो जितना मैं सुन पा रहा हूँ तो वो वैसा। बट इतना शायद एडजस्टेबल है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि वो माइक्रोफोन से क्या हो रहा था ना, बीटीपी मिल रही थी, मैं चार्ज भी नहीं कर पा रहा था, और मैं लॉन्ग स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा, बिकॉज कैसा ना, वो चार्जिंग बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से एक इशू मेरे को मिल रहा था, इसकी वजह से आई थॉट कि अवॉइड करते हैं आज के लिए, और आज इस माइक्रोफोन, इंस्टेड ऑफ माइक्रोफोन जस्ट यूजिंग दिस वायर वाला थिंग, जो कि मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए वो बेटर, बिकॉज ज़्यादा आवाज़ भी ज़्यादा बढ़ा नहीं दे रहा है, और क्लियर भी आ रही है, और प्लस फैन की भी आवाज़ फॉर सम रीज़न नहीं आ रही है मेरे को। मैं माइक्रोफोन से भी कर सकता था, बट वही बात है, अभी मेरे को कैसा ना, वो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला पार्ट मेरे को अभी तक आता नहीं है, तो वो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला पार्ट एक बार मैं अगर फिक्स कर दूँ, या फिर वो चीज़ एक बार सॉर्ट हो गई ना, तो फिर मैं ऑब्वियसली एक्सटर्नल अपना ये MFI वाले से ही करूँगा, K8 वाले वायरलेस वाले से, बिकॉज वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है, आवाज़ बहुत मतलब एक अच्छे वोकल पे आती है। यहाँ पे कैसा आवाज़ थोड़ी फटेगी, थोड़ी सी आवाज़, इट विल साउंड लाइक अ रोबोट, समथिंग लाइक दैट। अब आज का एम क्या है, कल हम लोग ने लेट कोड में लिंक लिस्ट के 4 क्वेश्चंस किए 1 hour 40 minutes में। दैट वाज एक्चुअली अ प्रीटी मच गुड कि इतने कम टाइम में कर रही है हम लोग, इट्स अ गुड साइन, बट स्टिल आज सिमिलर आई एम जस्ट गोइंग टू डू दी 4 क्वेश्चंस ऑफ लिंक लिस्ट, और टारगेट वही है कि इस वीक में, अभी आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा, हमारा फुल फोकस्ड है कि हम लोग इसी वीक क्या बोलते हैं, अपना ये कंप्लीट कर देंगे लिंक लिस्ट का, मतलब ऑल मीडियम्स लेवल क्वेश्चन, और इजी लेवल के क्वेश्चंस भी आर नॉट गोइंग टू टारगेट इट मच। हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि इजी लेवल क्वेश्चन बन जाते हैं इजीली तरीके से, इट्स नॉट बिग टास्क फॉर अस नाउ। और बस यही है अभी मेरे हिसाब से, आई जस्ट नीड टू मेक इट मज एंड मेक यू शो माय डेस्कटॉप, वन सेकेंड यार। इधर क्वेश्चंस नहीं आपको दिखेंगे ना, हाँ इधर बेटर है फिर भी आज। अब ये ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, मेरे को इस चीज भी देखना है एक दिन बैठ के। हम्म। पार्ट देख लूंगा ना ट्रायंगल वाला भी, तो वो भी मतलब हो जाएगा सॉलिड अपना। इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेता होगा, इतना काफी है शायद।
हाँ ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड 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 गुड। तो मम्मी जा रही हो ना? हाँ ठीक है, बाहर से लॉक करके जाना फिर। अरे यार मैं अपना पेन टैबलेट निकाला नहीं अभी तक। ये तो हमेशा ये प्रॉब्लम ही हो जाता है मेरा, फिक्स ये अच्छे से प्रॉपर लगता भी नहीं है। आई थिंक सो, शायद कनेक्ट हो चुका है ये। आई थिंक अब इधर शायद अभी तक वो लाइट जल हुई नहीं है, बट लेट मी जस्ट चेक इट ऑन द ओपन बोर्ड। इज इट वर्किंग, इज इट वर्किंग? ओके सो इट इज वर्किंग। subscribe to my channel. If you find it informative. Alright, going to the next one. अभी हम लोग नीचे से चालू कर रहे हैं, हम लोग मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही करने वाले हैं अभी। हमारा कुछ ही बाकी थे, कुछ नहीं मतलब बाकी है अभी भी फिर भी, बट मैं कल आपको बोला था यार ये वाला मैं क्वेश्चन कर लेता, बट मैंने किया नहीं। स्पाइरल मैट्रिक्स वाला मैं अभी कर नहीं रहा हूँ बिकॉज उसके लिए आई नीड टू एक्चुअली वॉच दी वही वाला मतलब एंटी ग्रेविटी पे जो हम लोग ने एक सेव करके रखा स्पाइरल मैट्रिक्स दैट आई डिड इनिशियली। तो वही चीज़ है अभी, फिर मेरे को इसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा लॉजिक। खैर ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अगर मन किया ना तो हम लोग स्पाइरल मैट्रिक्स वाला अटेम्प्ट कर लेंगे एक बार। ये मेरे को एक बार ये लॉजिक थोड़ा सा, मतलब लॉजिक ऑब्वियसली मेरे को आई नो वेरी वेल, बट वही बात है कि साइन इन तो हो गया हूँ मैं यार, फिर भी नहीं शो करेगा। साइन इन तो हूँ मैं ऑलरेडी, हो गया। राइट, सिंगल comment explaining the my logic and ये करना है ना। ये कल हम लोग को लग रहा था कि एरे का क्वेश्चन है, बट वी एक्चुअली हैव टू सी इट कि क्या है ये क्वेश्चन। We are given a zero indexed integer array nums in one step. Remove all elements nums I where nums I minus one is greater than for all. Okay, written the number of steps performed until nums become a non-decreasing array. 5 3 4 4 7 3 6 11 8 5 11, so 5 हो गया। We have to remove the 3 as well, then 4 becomes 3 निकाल दिया हम लोग ने। ओके एडजेसेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, मतलब 7 हो गया तो 3 हो गया हमारा एडजेसेंट।
6 हो गया, फिर 11 हो गया, मतलब टू टू का pairs we actually have to see it. 8 और 5 both because 11 और 8 भी actually में बड़े एक दूसरे से, that's why. Is it? Okay, so we understood, we have somehow understood it. अब यहाँ पे तो everything is actually sorted, so it is not at all in a decreasing order, but still. Okay. तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मतलब. अबे क्या हो रहा है? तो क्वेश्चन अभी आपको मैं समझाऊं, मैं यही एरे लूँ क्या, मतलब आपको समझ में आ ही रहा है वैसे, क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं. 4 4 7 3 6 11 8 5 11. Alright. एक बार इंग्लिश के टॉपिक में क्यों है, मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है. Absolutely true, yeah. Matlab, this is absolutely, this statement is, you would find it very much on the grid code. Majority of the test cases where you will be provided with them. Matlab, you cannot actually find out the pattern. Alright, so you look good. We can implement DB here.
See DP दिया है इधर DP हम लोग we can implement actually notice that an element will be removed if and only if the yeah ठीक है and second for each element we need to find the number of rounds it will take for it to be removed. The answer is the maximum number of rounds for all elements. Build an array DB to hold this information where the answer is the maximum value of DB. Mm, how would solve this with the DBR? This is actually a big question. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total size of size. So 11. Alright, man, this is. Hmm. So this is bigger. I think so. What I'll do instead for every round, मतलब simply हम लोग loop चला लेंगे और while we'll find out this in every steps, we have to make sure कि how do we actually delete an element from an array? How do we remove an element from an array? This is an array, right? This is obviously an array. No doubt, yes. So one second यार. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा silly है, but still I'm just कुछ erase करके करते हैं ना element. erase ही करते हैं शायद हम लोग. You'd have to अबे pop back थोड़ी करते हैं मेरे भाई pop back करते हैं. Removes the element at index. हाँ ये करते हैं भाई. My vector तो वो हो गया vector का dot erase dot begin plus 2 at index 2. So at index 2 removes the element at index 2. Okay. तो erase करना है मतलब alright. So while tree sorted मतलब if we find out that the two loops will work but it should not be भाई. एक सेकंड जरा हम लोग पहले तो बेसिक चीज कर दे. इसमें अगर आपको मैं समझा के मतलब नहीं है मैं ओपन बोर्ड पे अगर मैं आपको लॉजिक समझाऊं क्योंकि ये डायरेक्टली कोड करना ही बेटर है. I equals to 0 I less than n I plus plus n if nums of I नहीं यार मेरे को I minus 1 कर I करना रहेगा right. And then simply I plus plus. Alright. And we have to actually perform. And after performing this, whatsoever the array we actually get, the array we get is actually the new nums. Alright. Is the new nums, obviously. And now, um, while we will perform this again. Do okay, it's here.
लूप में चलाने के लिए मेरे को यही करना पड़ेगा. In order to perform this loop, what we have to do is that while this boolean is non-decreasing, हम लोग फंक्शन को कॉल इस तरीके से लूप के कंडीशन में नहीं कर सकते शायद, राइट? कि कर सकते हैं? Can we call a function inside? Can we call a function inside a loop, inside a while loop condition? Yes, you can absolutely. All right. So yes, non-decreasing norms and then equals to true. नहीं ये तो समझ ही आएगा मतलब तभी तो रन हो जाएगा. टोटल स्टेप्स हो गए. अब स्टेप्स काउंट करना है नतीजा. स्टेप्स नहीं राउंड्स. तो राउंड्स प्लस प्लस ओके. क्योंकि when it enters into the loop, it will increase. All right. So it will. So this is right. Absolutely right. And then majorly I think so. My answer is right. I guess, but I'm not sure yet. But still, यार मेरे को क्यों लग रहा है मैंने ना अभी भी फिर I just did something wrong. But still I'm just curious about this that कि मतलब इतना इजी लेवल रन टाइम एरर ऑब्वियसली यार रन टाइम एरर तो थ्रो करना ही है सो भाई क्योंकि लूप चल रहा है दो भी तगड़े. दो भी नहीं चल रहे यार उसके अंदर भी लूप चल रहा है भाई बहुत तगड़ा. इज दिस राइट अप्रोच? But it will. This is a great logic start. You have correctly translated the problems rule into the code. Use a loop to count rounds and helper functions to check the non-decreasing condition and erase to remove elements. All right, so mm, stack me. Use my way. Use my way. Use my approach. If this is not true, if this is true, okay, false रहेगा तो okay, okay. Yeah, it is right. It is the right thing. It is absolutely right thing. Like it is absolute. Man, I know. I understood why it is right thing, bro. रन टाइम एरर थ्रो करते हैं मेरे भाई क्योंकि जब इतना टाइम ले जा रहा है तो रन टाइम एरर तो टाइम लिमिट एक्सीड. इसका इतना वो कितना होगा यार. Time complexity would be for this is n square for every round. Yeah, n square तो लग ही रहा है.
एन स्क्वायर राइट. इधर कुछ दिया है कि हम लोग टाइम एन स्क्वायर होंगे 10 to 5 रहना चाहिए. तो मतलब यस वी गो शुड बी एंड ऑफ एंड. और अगर डीपी से हम लोग या स्टैक से ही लोग जो बता रहे हैं. अरे नहीं पॉप बैक भी कैसे ही कर सकते हैं टेक्निकली यू कैन यूज पॉप बैक बट इट ओनली फॉर टू टेक यू ओनली यूज द वाली लास्ट इंडिकेटर. Yes, yeah, of course, right. It takes a slow off, and so it is obviously taking a good amount of time. Oh, the better approach. Can you give me a give me a hint to find to make it time optimal, not to make it time optimal. Can you give me a hint, yeah? But still, I would just save it because ऑफ द. तो आपको ये लॉजिक बेसिकली समझ में आ ही रहा होगा. मतलब मैंने वही सिंपली क्या किया, एक फॉर लूप चलाया टू एक्चुअली रिमूविंग द एलिमेंट. रिमूविंग द एलिमेंट. अब ये फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा वाइल कंडीशन मैप रहेगा. मतलब हमारा जो एरे रहेगा, एरे जो है हमारा दैट इज नॉट नॉन डिक्रीजिंग येट. मतलब इट इज नॉट रेडी. इट इज नॉट रेडी येट. तो इसलिए हम लोग ने उधर ये डाला बिकॉज फॉर ट्रू इट विल वर्क. So for false, because every time it will show the false, but loop condition works when this is when this is true. So that's why we have to actually use this negation for that. And then every time we enter into this loop, it will obviously rounds plus plus क्योंकि obviously हमारा steps बड़े होंगे. तो ये हो गया हमारा दो loop. और एक हम लोग ने function लिख दिया अपना नॉन डिक्रीजिंग के लिए फॉल्स और ट्रू पे. ये बुलियन है, बुलियन फंक्शन. हाँ. तो ये हमारा फर्स्ट लॉजिक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्योंकि दो लूप चल रहे हैं इनसाइड. एक लूप एन स्क्वायर. टाइम लिमिट एक्सीडेड क्योंकि आस्क्ड फॉर as asked for O of n, right? And ठीक है, but still this solution would be still into a better way that कि हम लोग ने ये चीज़ सॉल्व किया. एरेज किधर गए, एरेज के मीडियम लेवल पे steps to make array non decreasing. Steps to make non decreasing dot cpp. uh,
make this time optimal and pass the lead code test cases, you have to stop actually removing elements. Every time you can remove an element, restart the loop, you are rescanning data you have already seen. The hint lies in tracking survival time of each number. The key insight, instead of asking which elements do I remove right now, ask how many rounds will it take for the number of to my left to eat me. So I think so every time, even if I would just make it, uh, but we have to perform this, right? We have to actually perform this. If we won't perform this, it will not be a good sign. But मेरे हिसाब से if I would perform this outside the while loop, will it be counted right? Will it be right? Will it be right? What do you think? मेरे हिसाब से this would be a right one यार. अगर मैं देखा जाए तो हम लोग करें तो it should not be. So this is also right. I think. Okay, we don't have to perform the rounds, right? But every time we actually have to check it ki, if but if we won't perform the if we consider this into the stack, then how will it work? 11. Then after that it is 5. It is 8, right? What's that? Dot pop. ये होता है एक बार अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर दे उस टाइम पे अगर आप ऑप्टिमल फाइंड आउट यू कैन नॉट फाइंड आउट ना देन हाउ डू वी एक्चुअली यूज डीपी stack pair integer stack store pairs of values steps to be removed steps to be removed मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रहा है steps to be removed what do you mean by that for integer I n minus 1 I greater than 0 I minus minus okay it has started from the end of the this because as it is stack obviously so now um, integer current elements steps equals to 0 while the current element is greater than the top of the stack when the current element is actually greater than the top of the stack it will eventually eat the element on the stack
white, st dot empty, and nums I with an st dot top with dot first dot, and the time to eat this element is either its own removal time plus one or the removal time of it of element it already ate. Current element steps equals to maximum current element plus one कॉमा वे समझ नहीं आ रहा ब्रो क्या है ये यूज डीपी
ये नहीं समझ रहे मेरे अप्रोच एक्चुअली नहीं समझ रहा सॉरी बट मैं नहीं समझ पा रहा इट वाज एक्चुअली डिसगस्टिंग भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रही है क्या कह रहा है मतलब पूरे टाइम में भाई मतलब कुछ कहना क्या चाह रहा है भाई टीवी प्लस स्टार प्लस एब्सोल्युटली बुलशिट भाई मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा भाई सच है तो भाई विश मतलब obviously it should be it would be a better approach but I cannot see the logic behind it I cannot understand the logic basically and that is actually something which is a problem so moving forward for the next question, merge nodes in between zeros. You are given the head of a linked list which contains a series of integers separated by zeros. You are given the head of a linked list which contains a series of integers separated by zeros. The beginning and end of the linked list will have node dot value equals to 0. For every two consecutive zeros, consecutive means it's not the adjacent. Consecutive is basically the okay. Merge all the nodes lying in between them into a single node whose value is the sum of the all merged nodes. Once again. For every two consecutive zeros, merge all the nodes lying in between them into a single node whose value is the sum of all merged nodes. The modified list should not contain any zeros written in the head of the linked list. Modified linked list 0, 3, 1, 0, 4, 5, 2, 0, 4, 11, 11. Why? The above figure represents the given linked list. The modified list contains the sum of the nodes marked in a green. 3 plus 1, 4, 5, 2. Okay. 1, 3, 4. Okay, between the two consecutives, alright. We understood the somehow. We have understood the logic now. Uh let's go. So let me just write the firstly this 0 and then 4 and then 2 and then 0. So this is actually the places where actually maybe find out the zeros. Alright. So we have to actually make sure कि हमारा जो temp ये previous नहीं आएगा ये start रहेगा हमारा and this would be end. Alright. हम लोग को traverse करना है. Then we would just make for the next iteration we would just make it this. Alright. So yeah. Yes. So हम लोग पहले तो iterate करेंगे while temp not equals to null if temp value not equal to uh, 0 temp equals to temp next यहाँ पे हमारा end sorry this is the end alright and initially temp equals to start at head position alright this is this start for and find the range now this whole thing we have to sum up now नहीं for loop ही चलाएंगे ना नहीं while temp एक temp चलाएंगे not equal to uh, and sum equals to ये temp पहले तो start करेगा alright it would be at the start now because उसको रहना ही पड़ेगा तो वहाँ से temp का value है plus alright and then temp equals to temp next alright so ये हो गया हमारा एक चीज then we have to make it
ये हमारा जो start है, that should be end, and then again we have to do it. Yeah, do this. So basically there is actually three nodes that is working. पहले तो list node, uh, अपना list node start equals to head. List node end equals to head. While temp not equals to null, else not equals to 0. एक while तो चलाना ही पड़ेगा हम लोगों को. While central just assume it कि मैं चला रहा हूँ. uh, but every time it will create a start, right? नहीं यार, इससे अच्छा तो मैं अंदर मैं एवरी टाइम क्रिएट करने से अच्छा तो मैं बाहर ही एक बार क्रिएट करके मैं अंदर अपडेट कर लिया करूँगा. uh, इधर तक तो भी आपको समझ में आ गया होगा. तो इसके बाद ये भी मोस्ट ये हमारा बहुत रिक्वायर्ड स्टेप है. और ये स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हम लोग नया हेड ही बना लेंगे. अच्छा, what do you guys think? What do you guys think of this? Should we directly remove it? Because at the end we have to remove it. So I think so we should just create a simple new head. Yeah, new head equals to new head, new head 0. टेल से करना है कि हेड से करना है यार? हेड से टेल से करना रहेगा. बट वी हैव टू रिटर्न द हेड 4. Then what should we do here? Yes. Okay, so instead of this,
true, yeah. So logic समझेगा और अच्छी तरीके से. Let's think about this यार कि कैसे मतलब majority cases or logic in the handwriting you have solid mental model of the range between those. Uh, no comments. Dummy, list node, tail dummy. Alright. List node start equals to head. While start not equals to null pointer and start next not equals to null pointer. List node end equals to start ka next. Start next. Integer sum equals to 0. While end not equals to null pointer and dot value not equals to this sum plus equals to end value and n equals to end x. If sum greater than 0
tail next equals to new list node sum tail equals to tail next, right? So start equals to n and integer dummy. Yes. मतलब it is the convenient but logic is actually the same. मैं उसे लिख नहीं पा रहा था, मेरे को क्या नहीं लिख पा रहा था बताओ। रिटर्न डमी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं लोग, डमी नेक्स्ट। ओ इसीलिए हम लोग को एक बनाना चाहिए था वेरिएबल ताकि हम लोग ओके ओके दिस इज एब्सोल्युटली अ गुड लॉजिक। आपको समझ में आ रहा है मतलब इसने बेसिकली क्या किया ये, दिस इज एब्सोल्युटली अ गुड लॉजिक यार, ये चीज अच्छी बात है हम लोग को याद आ गई, मतलब समझ में आ गई और ये एक अच्छा अप्रोच मिल जाएगा हम लोग को। खैर अभी देखो ओवन बॉट भी रीड बहुत ज़्यादा ही गंदा है बट स्टिल इट इज अब क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रही है कि फॉर एग्जांपल व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, किधर गया था मेरा हाँ सो इट्स लाइक इट्स लाइक इन अ वे कि मतलब एक अभी इवन वी आर फॉर्मिंग एडिंग एलिमेंट एट tail, yeah, you can say insert, हाँ but still but still but still हम लोग head को में but still we can find a head, a nice logic यार actually में एक dummy बना लिया हम लोग ने 0 and then it will find point out to ये tail भी इधर ही है which is x is in pointer, alright, then it will point out the add wala new, and then when we actually want to return it we just do dummy next as it will point to the, even though the tail will be at the last position at the last node but still हम लोग को dummy next हम लोग we can find out the head position, actually my right approach है, great approach apparently। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इतना नज़रअंदाज ही कर लिए हम लोग पूरे तरीके से, 21% एब्सोल्युटली बीट इज नॉट राइट। लिस्ट नोड मॉडिफाई हेड नेक्स्ट next sum head next, why next sum not equals to null pointer, integer sum equals to 0। भाई क्या क्रेजी अप्रोच है, मतलब इसने ना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब यूटिलाइजेशन नहीं किया, मतलब जैसे कि देखो क्या कर रहा है बेसिकली ये जैसे कि हमारा ये है एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ मैं। तो मतलब हम लोग जो इतना मेमोरी यूज कर रहे हैं इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो अभी जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, अभी जैसे मैं यही एग्जांपल्स में आपको एक लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस एग्जांपल कि हाउ मतलब used it, alright, let me just make it 4 5 2 and then 0। अब इसमें देखो क्या कर रहा है ये मॉडिफाई, ये हमारा हेड हो गया इनिशियली मॉडिफाई एंड दिस अपना ये दोनों इज नेक्स्ट सम
was actually at this position initially, right? Initially, where initially, and then after this modify is still at that position or is at this position, but now Nexum will move in that case जहाँ पे हमारा ये जो लूप का कंडीशन लिखा है ये वाला मतलब ये वाला जो लिखा है ये वाला अभी जैसे ये जो है ना while nexum will move until nexum का जो value है will be equals to 0 and then at the same position plus equals to uh, next sum all right का value मतलब basically and next sum will next sum next all right during this. So now next sum is at the position of this. Next sum is at this position now. And it has plus and then they have said that modify value हमारा plus है modify value वाला जो लिखा है ना so ये हमारा जो है that should be sum के equal. तो अभी जैसे modify हमारा क्या होगा ये zero तो छोड़ो आप ये तो छोड़ो ये 4 हो गया इधर ये modify हो गया हमारा currently. This is the modify and then in the next step what they have said is that we have to find out we have to point उसके पहले हम लोग को next sum को हम लोग को इधर ही point out करा देना पड़ेगा next sum को हम लोग ने क्या किया next sum को हम लोग को before making it connection with the next node what we are doing is that we just increasing so that कि हमारा zero से connect ना हो इसकी वजह से हम लोग ने next sum को again next करा दिया क्योंकि next sum is at this position 0 तो ये जैसे करा है हम लोग ने पॉइंट आउट कर दिया ये वाले नोड पे राइट अब नाउ नेक्स्ट सम इज एट दिस पोजीशन राइट अब क्या करना है हम लोग को मॉडिफाई को हम लोग को सिर्फ एक स्टेप आगे लेना है ताकि मॉडिफाई हमारा इस पोजीशन पे आ जाए और सिमिलरली हमारा ये देखो ये वही बन गया मॉडिफाई और नेक्स्ट सम सिमिलरली हमारा क्या बोलते हैं ये फर्स्ट स्टेप वाला हो गया मतलब पाथ ये अरे एब्सोल्युटली ग्रेट लॉजिक है मतलब absolutely a nice use of basically a nice use of actually space भाई मतलब this is actually a salute to this भाई मतलब the level of memory they have not used the level मतलब actually space बहुत कम यूज किया और optimal मेरे हिसाब से होना चाहिए 65% देख रहे हो किस तरीके से बढ़ा है ये this kind of questions usually have this much of bits only but it is absolutely a nice approach है मतलब क्या सही approach था भाई मजा आ गया भाई देख के मजा आया यार ये क्वेश्चन को करने में एक्चुअली मतलब इट एक्चुअली डिपिक्ट्स कि मतलब मेरे को ये चीज़ नेक्स्ट टाइम से और जैसे पहले भी क्वेश्चन में मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग मिली वो टेल इंसर्टिंग या टेल्स के होने के बावजूद हम लोग किस तरीके से वी कैन एक्चुअली यूज इट ये तो यार हो गया इंग्लिश मीडियम लेवल क्वेश्चन अबे यार ये क्या क्या खुल गया ये 150 क्वेश्चंस में मैं कर रहा था पहले लिंक लिस्ट राइट दिस इज बढ़िया दिस इज क्या है क्वेश्चन भाई merge nodes in between zeros between zero
तो इसलिए मैं करता था ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम व्हेन इट कम्स टू रिवीजन ताकि मेरे को अच्छे से रिवाइज करना। भाई ये नहीं है भाई, क्या कर रहे हो भाई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Maximum twin sum of all interest. देख रहे हो 21% से किस तरीके से लॉजिक इज एक्चुअली क्वाइट सेम बट फ्रॉम बीट्स टू 21% टू 65% एक्चुअली ह्यूज है, इज एक्चुअली कमेंडेबल मेरे हिसाब से तो मेरी ये नहीं आती परसों भाई सडनली अंधेरा हो गया पूरा यार। तो एक्चुअली मैं दिस वाज अ वेरी नाइस अप्रोच यार, मतलब एक्चुअली मैं एक मिनट जरा मैं अपनी वॉइस आ रही है ना बस, तो इट वाज एक्चुअली अ नाइस अप्रोच यार। अभी ये सम करना है ना, maximum twin sum of a linked list in a linked list size of n where n is even. The ith node zero index of the linked list is known as the twin of the n minus one ith node f. मतलब all right, so 5 and 1, 0, 1, 2, 3. So 0 and 3 and minus 1. So this would have the combination, this would have the twin. So basically 5 and 1 and 4 and 2 is the combination. For example, if n equals to 4, the node 0 is the twin of node 3. Twin of node 3 and node 1 and the twin of a node 2. There are only nodes with the twins for n equals to 1. The twin sum is defined as the sum of the nodes and the twins given the head of linked list with an even length written in twin maximum sum of the linked list. 4, 5, 6. Okay, so maximum sum we have to actually find out. Alright, so this is actually quite amazing, yeah. Actually, much अच्छा तो मेरे हिसाब से we don't have to update or we don't have to modify the linked list. We just have to make sure कि हमारे जो values है that should be present. So for example in a test case थोड़ा सा अच्छा मिलना चाहिए था हमें, बड़ा टेस्ट केस नहीं मिल रहा बट ठीक है चलो। फॉर एग्जाम्पल इन द टेस्ट केस 4 2 2 3, फॉर एग्जाम्पल 4 2 2 and 3. This is question number 3 we are doing, all right. हाँ, 4 2 2 3. This is the head and twin is actually 0 1 2 3, 0 3 1 2 twin. twin basically तो ये हो गया। अब क्या करना है हम लोग को? अबे सिंपली यार, बट नहीं यार,
Should we make a duplicate for this? Should we reverse the shrink? Should we reverse the linked list and then we will, but yeah, it will use an extra space and that would not be an optimal way of solving this question. As it is a singular linked list, we cannot reverse it backwards. So we have to be forward and then. So maximum it will take n, alright, but n plus, so it will eventually going to take an n square of time for sure. Would n square be a nice approach for this? But let me just, मेरे को देखो क्या लग रहा है ना, मैं every time I would just iterate, मतलब हम लोग index position करेंगे और we would go to until, firstly should we find the length of the linked list? Should we find out the length of the linked list? Is it required anyhow? क्योंकि एक हम लोग को इधर पॉइंट करना पड़ेगा. uh, mm, this is pair one and we have to pair this. एक हम लोग को यहाँ पे find out करना होगा. तो always we have to traverse and make sure कि हमारा every में pair हमारा one से increase हो. तो हमारा basically पहले में क्या होगा, n का होगा and then दूसरे में क्या होगा, n is the length of the LL. Alright. Then दूसरे में क्या होगा, हमारा n minus 2 हो जा रहा है. दूसरे में क्या होगा, n minus 4 हो जाएगा. तो ये ऐसे कर करके n minus 2 plus n minus 4 plus every time, मतलब ये iteration होगा. This is iteration वाला part in the loop, iteration and loop. While, alright, while ही चलेगा, मतलब while would be stating that कि हमारा जो pair है two it equal not equals to, नहीं यार, मतलब एक बनाना पड़ेगा हम लोग को एक वेरिएबल ताकि वो लेंथ के इक्वल ऐसा कुछ करके आ जाए. ठीक है, मतलब समझ गया मैं मोस्टली, बट इट इज यूजिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मेमोरीज. भाई ये स्टार क्यों नहीं बन रहा भाई? लीजिए, लीजिए लेंथ.
Not a right approach, why? This is absolutely a worst approach. ये तो मैं brute force तरीके से सोच रहा हूँ यार. It is absolutely not an optimal way of solve this question now. What I can do यार, मतलब I need to actually have some hints. पहले तो एक hint ले लेते हैं, जरा देख लेते हैं. Hint given है 10 raised to 5, मतलब it should be around 10 raised to hint 4 hint मिला ना, एक hint missing भी पड़ा, 3 hint raised to. Okay, so the hint is actually is quite relevant, quite good. मतलब what they are saying actually. क्या हो गया भाई? Oh, भाई मेरा कुछ वीडियो है. हाँ, तो what they are saying is instead you have to just make it then this and then just remove, then just remove and then just point these 2 pointers. That's what they are saying. मतलब divide into half, divide half, and then reverse second half, and then 2 pointers. Okay, so this is also a nice way of doing it, but still. Not a most this one, and then रिवर्स वाला तो मेरे को पहले से ही बोल रखा था, बट ये थोड़ा एक डिफरेंट वे ऑफ they have given me this 0 and then while half now equals to
बे यार रिवर्सिंग वाला भी लॉजिक समझ में थोड़ा सा भारी पड़ता है बे। लॉजिक नहीं मतलब वो कोड ऑप्टिमल वे में मैं भूल ही जाता हूँ हमेशा, तो रिवर्स करना है, पर लॉजिक इज एक्चुअली क्वाइट। तो ठीक है मतलब, तो दैट वाज द डे। और हम लोग ने अच्छे 3 क्वेश्चंस किए एंड 3 क्वेश्चन समझ लो, लास्ट क्वेश्चन भी हो ही गया है। अब वही बात है, मतलब स्टेप्स भी नो, बट वही है रिवर्सिंग के लिए अभी मेरे को ऑप्टिमल वे क्या है वो चीज़ आई नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या करना है मतलब, मेरे को एक्चुअली में अभी आई कैन नॉट रिकॉल इट करेंटली, बट यस, सो दिस वाज द डे एंड दिस इज आई गेस द eighth day of 30 days stream. So bye guys, and see you. Should we play a chess game? Should we do it? Let's do it. Let's do it, bye. Let's do it. Let's do it. 1 second, 1 second. Should we do it? Do it? Do it? Do it? Do it? Should we do it? Do it? Do it? Do it? Do it? Yes, of course. So yes, let me just play and अपना mouse निकाल दिया जाए ताकि so that we should have the quick movement और so yes। अबे चल क्यों नहीं रहा ब्रो ये? ओए चल रहा है कि नहीं माउस मेरा? यस चल रहा है, तो मेरे को चेस वाले स्ट्रीम लेना पड़ेगा। इसको डिस्प्ले हटाओ भाई, पहले तो चेस का डिस्प्ले लगाओ एंड देन so yes, विजिबल है क्लियरली। ओके, a very normal move that we are doing। तो ये लोग जो ट्रेड लेते हैं ना भाई, दिमाग खराब हो जाता है मेरा तो। ले ले भाई, ट्रेड ही लेगा तो मेरे को पता है। पता है मेरे भाई, तो ट्रेड ही लेने के लिए बैठा है फुल एकदम। हम्म, लेगा क्या ट्रेड? आपको क्या लग रहा है, लेगा ये ट्रेड? लेगा ट्रेड? ट्रेड तो नहीं लिया बंदे ने, और इसका ये तो चला गया।
मेरा भी ले लेगा वो मोस्टली। ये लेगा ट्रेड भाई है। That's what I assume, but apparently उसको लेना तो नहीं चाहिए। मैंने उधर ब्लंडर किया, I should have just take it, but still that is not worst move I guess, but still चलो ये पॉन पे घूम लेगा।
I've somehow blundered, yaar. This one. If I would take this, it would give a check here. Then there is absolutely not this. This would be a better move, but it will be a very great blunder, I guess. Please, have say if I would take here, it will go with this. Then we'll go here. We'll go here. We can actually can go here and can go here, right? But here हम लोग जैसे ही जाएंगे हम लोग को वापस से चेक मिलेगा यहाँ पे और okay, so not a great move, भाई, not a great move. Apparently, पूरा चेक लगेगा अभी. मैंने ब्लंडर कर दिया यार. Why यार, मतलब I should have just played it very annoyingly, but I did very dirty. Why I did absolutely dirty. हो गया checkmate. ठीक है, न्यू 10 मिनट मैच. विल प्ले और अच्छे से खेलेंगे अभी. बैक ही लेगा ये. इधर ही बैक लेगा और नाइस मूव. A great move apparently. Mm, uh, 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 uh. ये पॉन को भी आगे ही लाएगा वो नेक्स्ट मूव में. So what should I do in the next move? लाएगा भाई, पॉन को ही आगे लाएगा वो नेक्स्ट मूव में तो. Of course he will do that. बट यहाँ से मेरे पास अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुए to actually play it. Back to this would block it. So there is apparently not a right way of doing it, which I would just not would not do it anyhow. चलो यार ट्रेड ही ले लेगा तो मैं ट्रेड ही ले लूँगा. ले लेगा वो ट्रेड मेरे हिसाब से तो.
फिर मतलब ले ही लेगा ऑब्वियसली नाइट को मेरे, अगर वो नहीं लिया तो दैट इज अ बुलशिट. But the night can actually can make your game very worse. But that is actually a pretty much nice move, I guess. Uh, वही किसी का भी लूज ही नहीं हुआ अभी जस्ट सोचो. Nobody is lost yet. A single pawn by single piece. Nobody. Nobody. Absolutely nobody. ये तो ट्रैप हो चुका है यार अभी. हम्म,
मैं पूरे टाइम देखा हूँ ना भाई, ये जो बूम था उसको ऑलरेडी देख चुका था ये, कि जैसे वो एक बार मेरे ब्लॉक कर रहा था क्योंकि उस सोचा ही नहीं होगी ब्रो। भाई मजा आ गया भाई। एक लास्ट मैच, एक लास्ट मैच, इज इट रिक्वायर्ड? खेलेगा एक लास्ट मैच, चलो एक लास्ट मैच खेलते हैं। इवन इफ वी लूज, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल। ये पोजीशन पे भी नहीं ला पाएगा वो। ये अच्छा लग ये थोड़ा लूज कर दूंगा, मेरे को लग रहा है मैं लूज कर सकता हूँ, मैं मोस्टली मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मुझको भी यूज करूंगा मैं। इसका एक आगे लेगा तो मैं इधर इस पोजीशन पे आ नहीं पाऊँ। अबे यार नहीं ब्रो। सरेंडर भाई अब तो। हाँ भाई, बस ये भाई, बस आप तो apparently a very bad game, very very bad game, after much bad game.
सोच रहा है, अच्छी बात है भाई बंदा। सिर्फ एक क्वीन मिल जाए यार, मेरे हत्ते आ जाए बस। एक बार इन केस भी अगर आ गया ना भाई, मजे है मतलब मेरे को तो चाहता ही हूँ क्वीन आ जाए एक बार इसके हाथ, मेरे हाथ में। भाई ऑटो रिजाइन दे देगा? नहीं यार, ऑटो रिजाइन तो नहीं देगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सोच रहे हो बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से। अब वो सोच क्या रहा है, मैं वो सोचना चाह रहा हूँ। देखो अगर एक क्वीन को इनकेस इधर इधर मूवमेंट लाया, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग बी कि मैं इधर अटैक करूंगा ही। बट इधर अटैक करने से ना मेरा ये ओपन हो जाएगा, तो अटैक बिल्कुल ही नहीं करूंगा मैं इधर वापस से। बट इंस्टेड मैं यही पॉइंट पे एक प्रेशर बनाने की कोशिश करूंगा, इधर जाऊंगा और फिर इसको एक हटाने कर दूंगा। हाँ बे, फकअप कर दिया क्या? बट नहीं आई गेस। तो पॉन का डिफेंड है भाई, पूरा हर एक पॉन डिफेंड है इसके भाई ऑलमोस्ट। अरे फोन को डिफेंड कर रहा हूँ मैं तो बस। बहुत गंदा है इधर का जो वुडलिंग चल रहा है ना, मतलब मैंने पूरा ब्लॉक ही कर दिया उसके पॉन बेसिकली। अब ही इज नॉट इन द राइट पोजीशन कि वहां पे वो अटैक कर सकता है मेरे को। प्लस इसको भी स्टॉप कर दूंगा मैं तो।
करेगा यार इसको हम नहीं किया नाइस है बहुत ठीक है वही मिला तो क्या उसको तरफ से बस उसको बचाना चाहिए था यार ठीक है अबे यार चेकमेट हो गया मैं वही चेकमेट हूँ मैं यार मेरे भाई चेकमेट में चेकमेट हूँ मेरे से भाई सोच ले मेरे भाई सोच सकता है तू शायद मेरे को ऐसा लग रहा है सोच तो नहीं भाई मोस्टली अब देखते हैं सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहा भाई क्यों सोच रहे हैं यार अबे यार अगे यार ठीक है मतलब all good but still we were just मतलब यार